So in yesterday class we discussed about how to represent rational numbers on the number line. We discussed that, na? And in that test all of you got passed. Means all of you know how to represent various types of rational numbers on the number line. Today we will discuss how to represent irrational numbers. What? Irrational numbers on number line. Especially the numbers which are in the form of root. I mean to say, beta, we can write irrational numbers in the two forms. One in the decimal form and other in the square root form, right? So we will see how to represent irrational numbers. Okay? How to represent irrational numbers on the number line. Okay? So let's start. Suppose this one is a real number line, okay, and you want to represent under root 2. Question is represent under root 2 on real number line. Okay, this is the question. Represent under root 2 on real number line. Actually, beta, just as in the case of rational number, we know the exact position of the number on the number line. In case of rational numbers, we know exact position of that numbers on the number line. But in case of irrational numbers, there is no exact position, na? We have only geometrical way to represent this thing. मेरी बात समझ रहे हम क्या कह रहे हैं? देखो, अगर रैशनल नंबर है तो अगर तुमको 5 करना है, क्या करना है? 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, तो 5 की एक फिक्स पोजीशन है, क्लियर? लेकिन अगर तुमको अंडर रूट 5 करना है, तुमको क्या लगता है अंडर रूट 5 की एक फिक्स पोजीशन है नंबर लाइन पे? अंडर रूट 5 की जब तुम वैल्यू देखोगे तो ना रुकेगी ना रिपीट होगी, वो तो चलती जाएगी, जितना डीप में जाओगे उतनी। बात समझ में आ रहा है? इसलिए टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन वी यूज ज्योमेट्रिकल वेज टू फाइंड दोज नंबर ऑन द नंबर लाइन. Geometrical ways means with the help of the compass. Okay, so let's see how to represent a irrational number, for example under root 2 on the number line. Suppose this point represents 0. Okay, let's take this point as a represents 0. Now take a measurement of 1 unit from A. Take a measurement of 1 unit from A. Let's take a point B. From here to here it is 1 unit. Okay, beta? AB is 1 unit. Now draw a perpendicular on B. Draw perpendicular on B. You know how to draw perpendicular at a given point? But you know how to, all of you know how to draw perpendicular. देखो, yes, with the help of compass only. ऐसे यहाँ पे it is not compulsory to draw with the help of compass only. आप अपने स्केल से भी कर सकते हो, ठीक है? But there is a way to draw with the help of compass only as well. If you draw a line perpendicular to a given point, there is a way in geometry that tells us how to draw a perpendicular
on a given point. Suppose B is a point and I want to draw a perpendicular line. I can draw with the help of compass only, okay? But it is not compulsory here to draw with the compass only. So you can use your scale also, okay? But you can use your scale, but the line should be perpendicular. If you are using a scale, you have to use your scales also, okay? That should be perpendicular ना. भाई अगर आप स्केल का यूज करेंगे तो फिर ध्यान तो आप ही को देना पड़ेगा ना कि वो परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? परपेंडिकुलर लाइन कैसे होती है? जो एकदम इस पे ऐसे आए 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऐसे, ऐसे मान लो, गड़बड़ है, इसके लिए बी भी हटाना पड़ेगा. Okay, this line should not come under this line. This is the extra part. You will not draw this part. So what is the length of this? 1 unit. 1 unit. Okay, beta. Let's name this point as a C. Then join AC with the help of a scale. You will join A to C. Okay, A to C. A symbol of 90 degree you can put here. Now AC is representing under root 2. AC is the length that is under root 2. I will explain how it is under root 2, and I will also explain how can you draw other numbers, like if you want to draw under root 3, under root 5, under root 7, and any number like this. Okay, I will explain this, but first of all see this one. Now AC represents under root 2. You have to take the measure of AC by your compass. Okay, you will put the center of the compass here and you will draw it by your help of your compass AC. First of all you will measure it with the help of your compass. For example, I will put my center of the compass here, then here, and I will cut a line here like this. Okay, suppose this mark here, this mark will represent under root 2. Why? So ये 0 है, this point is 0, and this length represents under root 2, and I mark this point equal to this length na. That's why this point represents under root 2. मेरी बात समझ में आ रही है? देखो ये लेंथ कितनी है? अंडर रूट 2 है. तो यहां से अगर हम यहां पे करेंगे तो ये क्या होगा? अंडर रूट 2 होगा. कई बच्चे सोचते सर यहां से करना जरूरी, सर यहां से नहीं खींच सकते क्या? कहने का मतलब है कि वो बोलेंगे इसको नाप लिया मैंने और फिर यहां से ऐसे खींच दिया. ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको मेंशन करना होगा कि 0 कौन सा पॉइंट है ना. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये पॉइंट ई है. इतना करने के बाद आई विल राइट कि हियर पॉइंट ई represents under root 2 where point A is
0. Yeah, point A represents 0. I mean to say here point A represents 0, so point A is under root 2. If you put the pointer of your compass at B and then you draw this length, in that case you will write here point, suppose I put my pointer here and draw a mark here, that is equal to this length. Okay, in that case this point will represent under root 2. But in that case I will write कि point B represents 0. मीन्स जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं वही point 0 का काम करेगा. ये बात समझ में आ रही है? अगर पॉइंट F वाला कंफ्यूजन कर रहा है क्यों पॉइंट B से शुरू करें, तो आप एकदम भूल जाइए, पॉइंट A से ही शुरू करिए, पॉइंट A से ही कर लीजिए. लेकिन ऐसा हो सकता है इसलिए हम बता दिए है ना. देखो एक्चुअली है क्या बेटा कि आपको ये लेंथ दिखानी है. अब ये लेंथ आप कहीं से भी मार्क कर सकते हो, बी से कर लो, ए से कर लो, है ना. ए से करोगे तो यहाँ पे आएगा, बी से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा. जहां से करोगे वो 0 को रिप्रेजेंट करता होगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो 0 से ही होगी ना. ठीक है. So let's see what is the logic or method behind this. Here AB is 1 unit, BC is 1 unit. Now you can see कि ABC is a right angle triangle. In right angle triangle, you know ना कि the angle opposite to right angle is known as hypotenuse. Okay. In right angle triangle you can use Pythagoras theorem as well. पाइथागोरस थ्योरम को राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकते हैं ना बेटा. व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. राइट. हियर हाइपोटेन्यूज इज AC. राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? किसी को दिक्कत है तो बताइए. देखिए here this one is a right angle triangle. The angle opposite to the right angle means this one. This one is the hypotenuse. Draw the mark of right angle. Those two sides which this mark touch, eliminate those sides. You will get only the hypotenuse. समझे? जिन दो साइड्स को ये एंगल ये मार्किंग टच कर रही है उसको काट कर गायब कर दो, जो बचा वही हाइपोटेन्यूज होगा, है ना. नाउ so here AC is the hypotenuse. Base or perpendicular, that depends on you. Base and perpendicular completely depends on you. You can take this one as base or this one as base. If this one is base, this one will be perpendicular. This one is base, this one will be perpendicular. समझ रहे हो क्या कर रहे हैं? हाइपोटेन्यूज तो AC है, लेकिन OB और BC में कोई भी परपेंडिकुलर कोई भी बेस हो सकता है. ठीक है. तो OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. बेटा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2, राइट. And AC is equals to under root 2, right? इस कैलकुलेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है. AC कितना आ गया? अंडर रूट 2. तो नाउ दिस लेंथ रिप्रेजेंट अंडर रूट 2. और हमें बस उस लेंथ से मतलब है जो अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट कर रही हो. उस लेंथ को हम कंपास पे ले लेंगे या स्केल पे ही ले लेंगे और उसको कहीं भी मार्किंग लगा देंगे उसकी. ठीक है. हाँ, ये बात मेरी ध्यान से समझ लो कि इस लेंथ को तुम ले लिए, बस यही है अंडर रूट 2. अब ये जहां रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये जहां रखोगे वो
और ये जहां काटोगे वो √2 हो जाएगा। बस समझ गए, चाहे तुम स्केल से करो, कंपास से करो, कुछ भी करो। तो बेटा देखो ये तरीका है √2 के लिए। और सिमिलर वे देखो, इसमें कोई और तरीका लगेगा नहीं। ऑलवेज यू विल यूज ज्योमेट्रिकल वे ओनली। वी हैव ओनली ज्योमेट्रिकल वे, मीन्स वी हैव टू यूज आवर कंपास ओनली। और कोई तरीका नहीं है कि सर ऐसे ऐसे खींच दें कुछ हो जाए। हाँ एक और तरीका है, लेकिन वो भी ज्योमेट्रिकल ही है। इन दैट मेथड you will have to compass also. Okay, for example, now if someone says represents √3 on number line, if you have already drawn √2 on number line, then it is very easy to draw √3, right? कुछ बोलना चाहते हो बोलो। बैठ जाओ। देखो एक स्पाइरल यहां हम बना के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे दिस वन इज √2, नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर एट पॉइंट C, परपेंडिकुलर एट पॉइंट C on AC like this, and the length of that perpendicular should be 1 unit. Okay, this is 1 unit. Okay, now join, name this end points of this 1 unit as a D. Now join OD. Okay, this one is the 90 degree. Now OD represents √3. OD will represent √3. You can justify your answer by similar method, है ना। इसी तरीके से आप चेक कर लीजिए, OD √3 है। मैं एक चेक करके दिखा रहा हूं। Look at here, in triangle ADC, in triangle ADC, which one is hypotenuse? Shreyans, AD. हाँ राइट बेटा, दिस वन इज A ना, AD. AD is hypotenuse. So AD square will be equals to AC square plus CD square. एक्चुअली कहीं कहीं मैंने जो है ना ये A की जगह O लिख दिया था, क्योंकि हमें वो O लग रहा था, हमें 0 था वो, लेकिन O की तरह हमने उसको ट्रीट कर लिया, A को ध्यान नहीं दिया है ना। तो AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC इज √2 ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3, AD will be equals to √3. Clear? So by this way you can represent √3. Now suppose you want to represent, we have already represented √2, √3. Now you want to represent √4. This is the equals to 2. दिस इज अ सिंपल ना कि ये तो इक्वल्स टू 2 ही है, तो वो आप 2 ही समझ सकते हैं उसको। लेकिन इस स्पाइरल वाले में हम आपको ये बता देना चाहते हैं, उसको भी शामिल कर लेते हैं। सपोज यू वांट टू रिप्रेजेंट √4,
you will draw a length of 1 unit on AD at point D. That length will be perpendicular 1 unit, and you will join this end point. Okay, you will join this at point to A. Okay, now this will represent under root 4. This is under root 3. ओके, ये अंडर रूट 4 होगा बेटा. अब श्रेयांश, now you will tell me if I want to represent under root 5, then what we have to do. हम क्या करेंगे बेटा? अंडर रूट 5 करना है. मान लो इतना है मेरे पास, अंडर रूट 5 करना है, तो ई पे परपेंडिकुलर कितना होगा उसका? 1 यूनिट. वेरी गुड. ऐसे खींच देंगे. 1 यूनिट होगी ये लेंथ. ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी. इसको यहाँ ज्वाइन करेंगे, ये अंडर रूट 5 हो जाएगा. क्लियर है? सिट डाउन. सिमिलरली अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8 तक हो जाएगा बेटा. इसको बोलते हैं स्क्वायर स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल. समझे? अभी एक तरीका और मतलब है, वो पॉइंट वाले नंबर में यूज होता है, उसको हम बाद में बताएंगे. Now you can represent under root 2, under root 3, under root 5. No need to represent under root 4 like this. ना, under root 4 को तो ऐसे रिप्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं है. उसको तो सीधे तो कर दिखा देंगे नंबर, रियल नंबर लाइन पे, तो दूसरे तरीके से ही हो जाएगा. ठीक है? Now I hope you understand what is the method behind this. The logic is you have to find the length that you want to represent. Suppose you want to represent under root 2, you have to find the length under root 2 geometrically. बात मेरी समझ रहे हो? करना क्या है बेटा? करना है कि जो नंबर हमको रिप्रेजेंट करना है उसका लेंथ हमें ज्योमेट्रिकली फाइंड आउट कर लेना है. बस वो हमको मिल जाना चाहिए. कैसे भी, जैसे तुम कर सकते हो. एक तरीका तो हम बता दिए. अभी हम थोड़ा सा इसके और डिटेल में जा रहे हैं. ठीक है? देखो, सपोज कि समवन सेज कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 5, represent root 5 on real number line. Okay, represent root 5 on real number line. You will take this path or this way to go there, but there is another shortcut way to as well. एक शॉर्टकट भी है. शॉर्टकट कैसे है? अभी हम एक शॉर्टकट दिखाएंगे, आपका दिमाग भी चलने लगेगा. हो सकता है आप भी शॉर्टकट लगाने लगे. ठीक है? वी हैव टू रिप्रेजेंट अंडर रूट 5. आप तो ऐसे जाएंगे, दिस विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग. नाउ लुक एट अ शॉर्ट वे टू गो एट अंडर रूट 5. सपोज दिस पॉइंट, this point A represents 0. Okay, now take a length of 2 unit. What? 2 unit from A to B. This is 2 unit. Okay, and now draw a 1 unit perpendicular on B.
1 यूनिट। समझ में आ रहा है बेटा? अब ए से बी तक 2 यूनिट लिया है मैंने और बी से सी तक 1 यूनिट। नाउ ज्वाइन ए सी, ओके, ज्वाइन ए सी। नाउ ए सी इज रूट 5। Here AC is under root 5. You can justify it by the help of Pythagoras theorem in triangle ABC. Na? AC square is equals to AB square plus BC square. Now this is 2 ka square plus 1 ka square equals to 5 na? 4 plus 1 5. AC square is equals to 5. So AC is equals to under root 5. क्लियर है? अभी थोड़ा सा तो बच गया ना स्टेप। अगर इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ओनली अंडर रूट 5 तो शॉर्ट हो गया थोड़ा, या आपको अंडर रूट 6 रिप्रेजेंट करना है तो आप यहीं से शुरू करो। सपोज की क्वेश्चन इज देयर कि रिप्रेजेंट अंडर रूट 7 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट इस तरीके से जाओगे बेटा तो थोड़ा समय लगेगा ना, ऐसे ही जाओ। नाउ दिस वन इज अंडर रूट 5, draw perpendicular here, 1 unit, join this will be under root 6 na beta, then draw perpendicular here, 1 unit, join this will be root 7, okay, समझ में आ रहा है? ऐसे ही रूट 8 भी आ जाएगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो रिप्रेजेंट अंडर रूट 10 ऑन द नंबर लाइन। अपना थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। रिप्रेजेंट अंडर रूट 10, 12 कर दें। आप अपना दिमाग चलाइएगा, क्या कहना चाहते हो बोलो? कुछ नहीं। अच्छा, now this time I will not go through the measurement, okay, I will see only your steps। जैसे अभी मैंने 1 यूनिट 2 यूनिट नाप के तो किया नहीं है, ना ही हमने कंपास यूज किया है। यू विल डोंट हैव दैट कंपास राइट नाउ, राइट? आपके पास कंपास भी तो नहीं होगा, इसलिए अभी हम बस आपका स्टेप्स देखना चाहते हैं कि आप सही तरीके से जा रहे हो कि नहीं।